Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about B.Ed first semester English Pedagogy Unit 3 ଆମେ start କରିବା listening and speaking skill ଉପରେ okay. So let's start. Before we going to the topic, first ଆମେ sub point ଦେଖି ନେବା types and soft skill of listening, techniques and material for teaching listening, then soft skill of speaking, technique and material for teaching speaking, okay, activity to develop listening and speaking skill. ସବୁ ଆଜି ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଲିସନିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବା ଓକେ ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ सो बेसिकली इंट्रोडक्शन आम जाना द बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर कौन ना LSRW ओके ये तीन चार्टा जिनस लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग आम लैंग्वेज लर्निंग आम चार्टा जिनस यूज कर फास्ट आम शुणी था देन ताकू स्पीकिंग कहवाक लगी था ओके देन पढ़ा को बेटर वे आम पढ़ी था देन लिखि था आराम से ओके सो ये तीन जिनस कले आम गोटे लैंग्वेज को बेटर वे जापर बेटर वे आम कहीपर शिखिपर ओके देन as they are four in number they are term as fourfold skill of language learning. In short they are known as LSRW okay. language skill कहले हमें कौन बुझे skill of comprehensive or respective skill of recognition, passive skill okay, skill of expression, then productivity skill, active skill ये सब हो language skill आमर जाऊँगी ओके. सो पासिव स्किल कौन जाऊँ ना लिसनिंग आउ रीडिंग, एक्टिव स्किल स्पीकिंग आउ राइटिंग कहीं आम एक्टिव वे काम करुचे स्पीकिंग करवा राइटिंग करवा आम एक्टिव रोचे बट पासिव स्किल के रोचे ना लिसनिंग आउ रीडिंग ओके. देन type and soft skill of listening कौन अच्छे ना listening is the first step in learning in language. It is the foundation of stone for learning a language in full proficiency in listening lead to proficiency in speech okay. बेसिकली कौन ना आम सॉफ्ट स्किल और लिसनिंग वे जानवा गले फर्स्ट स्टेप कौन रोचे ना आम लैंग्वेज को लर्न करवा ओके. फर्स्ट आम लैंग्वेज को लिसनिंग वे नवा देन इट फाउंडेशन स्टोन फॉर लर्निंग एटा हूँ गोटे फाउंडेशन माने स्टेज होची हमर गोटे लैंग्वेज को शिखिबार. देन फुल प्रोफिशिएंसी आम जो चाहूबा ताले आम कौन करवा ना आम गोटे जिनस को स्पीच माने स्पीच रे प्रोफिशिएंसी चाहूबा नेचर को लीड करने चाहूबा ओके. देन फर्स्ट आम कौन ना लिसनिंग रे नबा देन रीडिंग करवा ओके. फाइनाली प्रोफिशिएंसी पाइबा गले आम निजर स्किल को आम डेवलपमेंट रे माने निज स्किल को आम डेवलप करवा ओके. देन अल्टीमेटली लीड टू प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज यूजेस जहाँद्वारा कि कौन आम लैंग्वेज यूजेस को प्रोफिशिएंटली आम यूज कर. देन हमारा आसला here teaching listening skill is very important. Types of listening कौन रोचे ना listening is broadly divided into three types. Focus using in intensive listening, casual listening, gist listening or extensive listening okay. then असला focused on intensive listening कहले हमें कौन बुझीबा ओके. when we focus attention on a particular news item and comes out with the fact and detailed some explains while listening to take the radio or TV news for election okay. बेसिकली कौन ना गोटे इंटेंसिव लिसनिंग जो करने जीवा तापर फोकस दबा सो से पर्टिकुलर न्यूज उपर आम तार माने गोटे माने माइंड आउट रखी था गोटे डिटेलिंग आम पर्टिकुलर न्यूज उपर तार फैक्ट उपर रखी था. एग्जांपल कौन ना रेडियो टीवी न्यूज फॉर इलेक्शन रिजल्ट और क्रिकेट स्कोर जोटा कौन ना आम माइंड से पर्टिकुलर न्यूज उपर ही थाए से पर्टिकुलर जिनस को शुणा चाहिए ओके. देन listen with zero purpose and we listen attentively आमर किसी पर्पज न थाए बट आम अटेंटिवली शुणा लगी था जी जिनसा कौन हम ओके. इलेक्शन स्कोरटा कौन आस गोटे एक्साइटमेंट आम भर थाए टीचिंग जो मैंने क्रिकेटर स्कोरटा कौन हम केमी कौ माने कौ दलटा भी जितब कौ किए हार ओके. सो ये कौन आम अटेंटिवली से जिनस को बिना पर्पज आम ताकू एक्साइटमेंट वे आम वेट कर ओके. देन काजुअल लिसनिंग कौन ना सॉरी casual listening opposed to focused listening when we listen to something without a definite purpose or attent is called casual listening okay. बेसिकली कौन ना आमर किसी माने पर्पज नथिबो ओके. आम सेमती माने गोटे रैंडमली गोटे जिनस को कौन लिसनिंग करिया लगे ओके. एग्जांपल कौन ना वी लिसन टू द रेडियो और म्यूजिक व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर और ईटिंग फूड जमती कि आमर किसी इंटेंशन नथिबो जे किसी सेमती किसी माने आमर किसी आवश्यकता नथिबो से जिनस को सुनिबारे बा जानिबारे बट आम से जिनस को शुणुवा जमती कि आम खाइला बेले फोन देखिबा ओके आउ खाइला बेले गीत शुणिबा न्यूज़पेपर पढ़ला बेले गीत शुणिबा सब से जिनस. देन आसला कौन ना एक्सटेंसिव लिसन ओके.
outline जोटा कि gist हमें कहता it is concerned with the understanding of the gist or outline of the extensive matter listen to example कौन रहुची when we listen to a play or radio we may not remember the entire conversation but we say in brief the main content of the play that's why it is the called gist listening okay gist means कौन ना summarize करिबा okay gist means होची कौन ना गोटे जिनसर सार तत्व ओके जेमती कि गोटे लंग स्टोरी आम शुणीदबा बट तार मेन टर्म जोटा आम माने जानिया को पाई थाउ जेमती कि कौन ना अति लोभे तंती मरे ओके सो से लोकटा एमती जाइथिला सेमती बुलिला लोभ कला देन तार माने तार किछि प्रॉफिट आला ना जेन से कहला ना तार लो सेंस आसीगला तापर से बहुत लोअर क्लास को पळेला ओके सो एते सब गप शुणिया परे जेतेले हमकु जने पचारिबो जे को गप थिला ना से गोटे समराइज वे रे ताकू कहलु जे को गपटा शुणिछ बोली बट से टाइम रे से कोन करबो ना से वर्ड टाकू यूज करबो बट गोटे समराइज वे रे गोटे जिंसटा कहबो जे गोटे लोक थिला से बहुत लोभ करथिला देन तार एमती लोभ द्वारा तार गोटे माने डाउन सेंस देखिया ताकू मिलिला सो सेठी कोन ना अति लोभे तंती मरे ओके सो से कथा ओके गोटे गोटे जिनस को रेडियो को आम शुणी रेडियो रे जो कौन जिनस हो गोटे स्टोरी आम देखी बट ताको जो आम गोटे जिस्ट आकार रे जानिया को लगिबा गोटे माने समराइज वे रे आम ताको बुझिबा को लागिबा बा अन्य जन को बुझेइबा ओके देन सॉरी soft skill of listening okay it is also called enabling skill ako पे enabling skill बोली कहि थाउ it is not for two it is of two types कौन ना listening for sound perception listening for comprehension okay आमे sound perception तक listening करथाउ देन आउ comprehension person ने भी तक listening करथाउ देन इसला listening for sound perception कौन जानिबा here listener has to identify a different sound को identify करिथाउ then group sound into meaningful units हिसाब रे interpret basic intention pattern stress rhythm pause for expression okay जोटे हमर कोन ना साउंड परसेप्शन नै था हमें पर्टिकुलर साउंड ऊपर हमें मेंशन करिथाउ then listening for comprehension कोन अछि ना here is the listener has to predict what the speaker is going to talk about okay तो इतरे कोन ना हमें comprehension ऊपर बेस ध्यान देते तो हमें सेठी माने प्रेडिक्ट करथाउ जे स्पीकर आगो कौन कहू जाउची बस को विषय कहबा को जाउची कोनटा से कहिला ओके अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रेज एंड सेंटेंस ओके तो सेतिर कोन हमें वर्ड रो मीनिंग तार फ्रेज को तार सेंटेंस को हमें बुझिबा को लागि थाउ देन स्टेटमेंट कोन रहला कमांड कोन रहला रिक्वेस्ट क्वेश्चन सब कुछ जिंस ग्राफ सब्सटेंस ओके आइडिया कोन न्यू आइडिया आसला तो ताको हमें अटेंटिवली ताको हमें लिसन करि थाउ देन तार जहां भी टास्क थाए ताको हमें कंप्लीट करथाउ रिलेवेंट क्वेश्चन को हमें मेंशन करथाउ ओके रिकॉग्नाइज करथाउ ठीक प्रोनाउंसिएशन को प्रोडक्शन को माने साउंड प्रोडक्शन को ओके मेंटेन ही एंड हर अटेंशन फॉर लेंथ ऑफ टाइम ओके कोन ना हमें गोटे पर्टिकुलर वे रे हमें गोटे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड देकी हमें गोटे जिंस को कोन अटेंटिवली गोटे माने कॉम्प्रिहेंशन नेस रे हमें से जिंस को फॉलो अप करिथा ओके देन असला कोन ना टेक्निक एंड मटेरियल्स ऑफ टीचिंग एंड लिसनिंग कोन रहउची ना दिस लिसनिंग मटेरियल कंसिस्ट ऑफ टीचर्स हैंडबुक a book of teaching objective and classroom activity, a pack of leaflets and poster and video of speaking and listening activity जो कि कौन ना टेक्निक आ मटेरियल टीचिंग ना हमें केमती सब यूज करि थाउ ना गोटे जिनस टीचर मान गोटे हैंडबुक रहा आवश्यक जो कि कौन ना से माने जे कौन गोटे ऑडियो विजुअल वे हो लिफलेट मध्यम हो पोस्टर मध्यम हो पिला कौन करेंगे ना गोटे जिनस को बुझे को आराम से सहज हम कहीं गोटे अटेंटिव वे अट्राक्टिव वे से जिनसा थी ना तो पिला नजर ऑब्वियसली से जिनस उपरक ही जीव गोटे अटेंटिव वे से शिखा लगे तो सीटा को आम टेक्निक कहीपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल ओके देन आसिल There is also a progression poster which set out some criteria assessing progress throughout the primary years range. Okay. Then the listening poster, the poster outlines. कौन रोची? Now what children are doing when they are listening? Okay. पिला माने कौन करछन्ती को जिंस से माने सुनिया को माने चाहूचंती then what children need to learn को पिला माने के पिला कौन चाहूचंती लर्न करबा को then how the children so they have listened and understood useful classroom techniques. Okay. Then technique of teaching listening कौन रोची ना bubbles and gavels. Okay. पिला माने कौन ना bubbles करबा और gavels करिया गोटे कैपेसिटी देथाउ से माने
टीचिंग रो से टेक्निक हिसाब रे ओके देन बैरियर गेम्स किछिटा बैरियर आनिबे तांकर माने टीचिंग लर्निंग मेथड रे जादर कि कोन से माने सॉल्व करे लागिबे वर्ड टेनिश करबा ड्रॉ स्टोरी करबा गोटे स्टोरी मेंशन करबा देन ताको पिला माने समराइज करबे तार भीतर क्वेश्चन जा आसीबे ताको सॉल्व करबे ओके देन टेलीफोन कन्वर्सेशन करबे पिला मानक भीतर माने पिला मानकर जो प्राइमरी सेंस रे हम जो खेल खेली थाउ देन जोतरे कि वे टू लिसन रहउची ओके देन bubbles couple means kon the technique encourages children to listen carefully remember the plot sequence of event the teacher start by telling a story afterwards the children work in pairs or one child returns the story to their partner as felt as possible for including as much detail as possible. After minute, the listener take over to continue the take the pattern continuously for a few turns. Okay, basically bubbles gabbles कौन थे ना टीचर को एनकरेज करता थी पिला मानू को कौन ना गोटे स्टोरी तांको सुनी थांती ओके गोटे स्टोरी टेलिंग मेथड रे तांको से माने स्टोरी सुनी थांती देन आफ्टर वर्ड्स से पिला कौन करता है ना से स्टोरी की ता पार्टनर को आराम से सुनी थाए ओकरे जिस आकार रे बजेमिति हो सुनी थाए देन अदर वे रे कहते हैं से पार्टनरटा जहाँ स्टोरी टीचर शुणी थे से ही वे परफेक्ट वे से प्रेजेंट करने को लगी था जमी किसी भी तार मिस्टेक रहा गोटे पैटर्न हिसाब से यहाँ गोटे चली था ओके देन आसला बैरियर गेम्स कौन मैंने स्टोरी को रिमेम्बर रखिकी से सिक्वेन्स को इवेंट को मन रखिकी आम कौन करता ना पिलामानकर मेमोरी पावर को एनकरेज कर गोटा साहाଯ୍य करता है ओके देन बैरियर गेम्स कौन ना बैरियर गेम्स फोकस ऑन गिविंग एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शन टू ऑर्डर कंप्लीट द टास्क दे इन्वॉल्व केयरफुल listening and giving clean explicit instruction the speaker has to provide clean instruction for the listener okay barrier games रे कोन ना पिला मन को हमें ऑर्डर करथाउ कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करिया पाई जोथरे कि कोन ना हमर इंस्ट्रक्शन जे थांती से माने पिला मन को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करथांती ओके जोथरे कि से माने निज टास्क को कोन ना कंप्लीट करथा निज बैरियर को निज सॉल्व करिया को चेष्टा करथांती ओके देन असला वर्ड टेनिस कोन देन माने जेंति कि involves making a story with a partner. Each person says a word, phrase, or turn to say. They gradually build up story. The children need to listen carefully for the keywords, main point, and events so that the story continues to make sense. Okay, basically गोटे word ऊपर कौन ना story create करथांती then ता partner कौन करते ना सही story रो key points को मन रखिथांती then new सही word ऊपर new पुणी से माने story को mention करथांती new story को create करथांती okay then असला draw a story. The involves children sitting and listening carefully to a story. Okay. Then telephone conversation. The children are encouraged to sit back to back, hold telephone conversation. The children need to listen carefully because they cannot really rely on gesture or facial expression. Okay. जो कौन ना पिला माने बैक टू बैक है कि बसंती गोटे टेलीफोन कन्वर्सेशन चली था जो कि से रिले कर कन्वर्सेशन को ओके बा फेसियल गेस्चर को ओके then way to listen means कौन ना children need to be given opportunity to listen with a given focus okay पिला मानक से opportunity हमें देता हूँ जिससे मैंने अटेंटिवली फोकस को मेंटेन करके सब जिनस को सुनने को चेष्टा करेंगे दे कुड लिसन टू ए टॉपिक एंड दे वर्क आउट क्वेश्चन दे वुड लाइक आंसर टू दे कुड बी प्रोवाइड विथ हेडिंग टू हेल्प देम लिसन टू सिस्टमेटिकली ओके गोटे सिस्टमेटिक वे कौन ने से गोटे जिनस को सुनिया चेष्टा करेंगे देन तार आंसर को देवे ओके दे कुड बी एनकरेज टू लिसन आउट फॉर द कीवर्ड्स दे कुड आस्क मेक पिक्चर इन देयर हेड्स एज देयर लिसनिंग ओके तो बेसिकली जहाँ से सुनी थे जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते से हिसाब से पिक्चर को मेक करेंगे तार क्वेश्चन आंसर देवे ओके देन असला ऑल चेंजेस कौन ना ऑल चेंज the children need to be made answer that center can make different things depending on which word are emphasized the children should be given the opportunity to discuss the impact of change okay basically कौन ना पिला मानक गोटे वे आम जो चेष्टा करबा सब जिनस को से गोटे पर्टिकुलर खेल खेलेबा तो पिला मानक माइंड रे निहाती भाबरे किछि ना किछि गोटे माने डलनेस आस जियो बट से कौन गोटे बेटर वे रे न्यू अपॉर्चुनिटी तांको दबा न्यू वे रे तांको विभिन्न प्रकार गोटे प्लेवर मेथड रे तांको माने कनेक्ट करी रखिबा ओके सो याद रखि कौन ना पिला मानकर न्यू डिस्कशन ऊपर इंपैक्ट आसीबो ओके माने न्यू जिनस ऊपर तांकर गोटे आइडिया आसीबो नॉलेज आसीबो ओके देन आसिला importance of speech okay like listening speech also primary skill in language learning in fact listening and speaking are complementary to each other okay basically कौन ना importance of speech रे हमें जानिबा
जे लिसनिंग आउ माने लिसनिंग लाइक लिसनिंग स्पीच ऑल्सो इज ए प्राइमरी स्किल ओके तो आम स्पेस दबा हूँ गोटे प्राइमरी स्किल जोटा कि कौन लैंग्वेज लर्निंग द्वारा ओके लिसनिंग द्वारा स्पीकिंग द्वारा ही एटा आराम से इच अदर द्वारा माने कंटिन्यूस करिवारे आमे जानि परिबा बा सिखि परिबा गोटे जिंस को आमे स्पीच रे आराम से कहि परिबा ओके देन बोथ ऑफ देम आर यूज्ड कंटिन्यूअसली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि करना कंटिन्यूअसली माने बोथ यूज करिकी आपको एनहांस माने क्रिएट करथान जेमति कि कोन जणे किछि जिंस कहबो देन आ जणे ताको कंटिन्यू करथाय ओके देन स्पीकिंग एबिलिटी इन अ लैंग्वेज सर्टेनली डिपेंड्स ऑन द लिसनिंग एबिलिटी ओके स्पीकिंग लैंग्वेज कहा पर डिपेंड करछि ना हमर लिसनिंग एबिलिटी ऊपर ओके देन आमे जते भल से सुनिया चेष्टा करिवे आमे सेते भल से कहि परिबा देन द प्राइमरी पर्पस ऑफ लर्निंग इन अ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ द टू टाइप्स जोटा कि कोन ना कम्युनिकेशन एटा टू टाइप्स रहछि ओरल कम्युनिकेशन इज स्पीच रिटन कम्युनिकेशन ओके फर्स्ट हमें जानबा कना ओरल कम्युनिकेशन कोन रहछि ना पर्सनल कम्युनिकेशन सोशल बा सोसाइटी कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन जोटा कि टीवी रेडियो माध्यम रे हेता ओके पर्सनल कम्युनिकेशन कोन ना इंट्रापर्सनल जोटा कि कोन ना विद इन टॉकिंग वन सेल्फ हमें निजे निजे भीतर निज हिसाब रे निज सहित क्वेश्चन करथाउ जे हमें कोन करूछे एटा जाउछि मु एबे खाइबी मोर एबे इच्छा लाबे एटा खाया निजे निजे भीतर कथा बा ओके बट सोशल सोसाइटी कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल जोटा कि ना बिटवीन टू पीपल दी जन के भीतर कथा वार्ता हबा जोटा कि हमें सोशल कम्युनिकेशन बा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कही था ओके देन मास कम्युनिकेशन कौन टीवी रेडियो एक्सेट्रा जाऊँगी जो कि हमें कम्युनिकेट अन्य मान जहाँ कही था आम सहित मैंने न्यू नॉलेज को गेन करता बट आम किसी न्यू ओपिनियन दे पार न था ओके देन आसला Speaking correct English require mastery of two major skill, namely linguistic skill and communication skill. Okay, these major skill गोटे linguistic और गोटे communication. So linguistic skill कौन ना phonetics और linguistic. Phonetics रे कौन ना production और linguistic रे आछि production of sound आछि phonetics रे और linguistics रे आछि production of sentence. Okay, production of sound रे कौन ना sound stress और intonation ଆଉ production of sentence रे grammar और vocabulary आसी जिवो. Then communication skill रे कौन ना expression आसीबो spontaneity आसीबो तापर रिसोर्सफुलनेस आसीबो फ्लुएंसी आसीबो ओके जोथरे कि कोन ना हमर एक्सप्रेशन भलो रहबे दरकार हमर स्पॉन्टानिटी रहबे दरकार और रिसोर्सफुलनेस आराम से रहबे दरकार देन फ्लुएंसी रहबे दरकार ओके देन आसिला द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीच कैन फर्दर elaborated and explained they are कोन ना proceeding speech sound in a intelligible manner okay हम speech को हमें गोटे intelligible manner हिसाब रे हमें present करबा using appropriate word stress sentence stress and intonation pattern okay जोते कि यूज ऑफ कौन ना असिस्टिव यूज करबा इंटरगेटिव इंपेरेटिव ओके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हमें देखिया को पाई था देन कन्वेइंग आइडियाज एंड प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर गोटे प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर रे हम आइडिया को कन्वे करिथाउ ओके यूजिंग एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इन अकॉर्डेंस टू द सिचुएशन ओके देन लाइक थैंक यू एक्सक्यूज मी गुड बाय वेलकम एक्सेट्रा हमें आमर माने एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन हिसाब रे हमें कोन करथाउ निज एप्रोप्रिएट सिचुएशन हिसाब रे हमें हमरा माने एक्सप्रेशन को शेयर करथाउ जेमिति कि आमको कई गोटे माने गोटे भल काम हमर कर देछि हमें त कोन थैंक यू कहबा कोन से हमें निजे भूल कले एक्सक्यूज मी कहबा कारू छाडिया के जोटले गुड बाय वेलकम एक्सेट्रा में सब एक्सलेंटरी चीज सब बा इंटरोगेटिव वर्ड सब सॉरी सिंपल माने ग्रेटिट्यूड वर्ड सब हम यूज करथाउ ओके देन कोन ऑफरिंग सेंटेंस एज अ रीजनेबल स्पीच ओके सो फर्स्ट हमें जानिबा नेक्स्ट हमें जानिबा 3.4 रे टेक्निक ऑफ एंड मटेरियल टीचिंग स्पीकिंग ओके कौन रोची ना speaking in traditional methodology usually meant repeating after the teacher memorization a dialogue or responding to drills of 1970 okay first teaching of unmaterial teaching speaking कौन रोची ना जो कि आम गोटे ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी रे कौन करथाउ ना रिपीटिंग करथाउ टीचर जहाँ भी आम जिनस आमको मेमोराइज करथिबे जहाँ भी डायलॉग आमको से माने सिखैथिबे ताको आम रिपीटिंग वे रे कौन करबा ना न्यू टेक्निक हिसाब रे आम ताको अप्लाई करबा और रेस्पोंडिंग टू ड्रिल ऑफ जोटा कि एटा केबे हेतला ना 1970s रे हेतला बट एटा कोन ना गोटे मेथोडोलॉजी जोथरे कि आमे गोटे जिंस को मेमोराइज करिकि ताको आमे रेस्पोंड करथाउ ताको ड्रिल्स करथाउ ओके ताको माने बारंबार ताको रिपीट करथाउ ताको जानिबा को चेष्टा करथाउ देन fluency become a goal for speaking course so we use various tasks required to the learner to develop their communicate okay basically आम स्पीच माने रिकमेंडेशन जोटा कि स्पीकिंग रे ओके विभिन्न प्रकार में टेक्निक यूज करथा जोथरे कि कोन ना हमें आम फ्लुएंसी सबठू मैटर करथा जदि हमें फ्लुएंटली गोटे जिंस को स्पीकिंग करि पारुछे कहि पारुछे तो कोन ना लर्नर कोन करि परबो से टाइम रे वेरियस प्रकार टास्क को रिक्वायर्ड करथे जादर कि से बेटर कम्युनिकेशन करि परबो निज वर्ड को निज सेंटेंस को से निज बा निजर
କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ସେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ। The mastery of speaking skill in English is a priority for many second or foreign language learner. Okay, जोटा कि priority ये रहुची. Then a book of the speaking material consists a teacher handbook. Okay, then a book of teaching object classroom activity. Then a book of lactals जोटा leaflets कही था बा poster a video of speaking and listening activity. Okay, जोटा कि कौन ना टीचर कौन करिवे ना क्लासरूम एक्टिविटी रे तांकर गोटे हैंडबुक रखिबे जोथरे कि कौन ना लिफलेट रहतो पोस्टर रहतो वीडियो ऑडियो विजुअल जिनस रहतो स्पीकिंग और लिसनिंग को एक्टिविटी को एनहांस करिया पाए। देन ऑन दिस बैक ऑफ ईच पोस्टर देयर आर सम की टीचिंग पॉइंट्स जोथरे कि कौन ना किछटा टीचिंग पॉइंट रो सम की थिबो जादुरा कि कौन ना टीचर बेटर वे रे प्रेजेंट करि परथे सम स्पीकिंग पोस्टर सम पोस्टर आउटलाइंस। ओके, सो what children need to learn to do. Okay, जोटा कि कौन ना पिला माने कौन करबा को चाहउछन पिला माने कौन जानिबा को चाहउछन। ओके, व्हाट स्पीकिंग इनक्लूड्स, देन हाउ टू एनकरेज चिल्ड्रन पिला नु केमते एनकरेज करई परिबा एटा जो टीचिंग स्किल। ओके, यूजफुल क्लासरूम टेक्निक। ओके, यूजफुल क्लासरूम टेक्निक इंक्लूड कौन ना टॉक पेरेंट्स पेरेंट्स मान सहित कथबार्ता करवा जे कौ सेक्शन ने पिला मानकर प्रॉब्लम रहउची कोथरे पिला माने निजको बेटर फील करछन। ओके, डिबेट करैबा देन माने पिला मानकर माने प्रॉब्लम जहाँ भी रहउची ता कमे कोन करना सॉल्व करे चेष्टा करबा। देन ग्लो पपेट्स एंड शैडो थ्रेड। ओके, जो कि कोन ना पिला मानकू puppet जो आमर रहुची puppet can be very useful encourage children to speak and to listen provide tape recording during rehearsal. He is the help children to develop and refine their work reflection on their use of language and how do they use their voice. Okay, so basically आम देखी दिबा गोटे ट्रेंड रे अछि कोन ना पिलाटा छोट पिलाटा जेमती यूज करिवो माने आवाज करिवो सेमिति से पपेट टा भी आवाज करछ। ओके, सो सेइ टाइम रे कोन ग्लो पपेट हम पिला मानको पई यूज करि परिबा जेमति कि जदि से पपेट किसी कहवाक लगुच बेटर वे इंग्लिश लैंग्वेज को से प्रेजेंट करुच्ची तो पिलामाने फॉलो करिकी बा रेकॉर्डिंग करी रखिकी निज मेमोराइजेशन करिकी से जिनस को लैंग्वेज को रिहर्सल करेंगे आराम से मैंने कौन लैंग्वेज स्किल को डेवलप करेंगे। ओके, देन आम आसला फर्स्ट कौन ना फोटो पेंटिंग द्वारा रेडियो ब्रॉडकास्ट द्वारा जस्ट ए मिनिट द्वारा। ओके, सो फर्स्ट आम जाना टॉक पेरेंट्स कौन ना द इन्वॉल्व्स पुटिंग चिल्ड्रन इनटू पेरेंट्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम बिल्डिंग opportunity for them to talk each other share idea and experience and reflect on what they have learned. Okay, basically कौन ना पिला मानकर जहाँ भी प्रॉब्लम होची टीचर पेरेंट्स मान जाना चेष्टा करेंगे देन पेरेंट्स मान से सजेशन करेंगे जे पिला मान सहित सी कौन करेंगे ना कि टाइम मेंटेन करेंगे कौन ना पिला मान सहित टॉक रे स्पीच रे ओके डिबेट करिबारे जो कि कौन ना पिला मानकर माने स्पीकिंग कैपेसिटी ओके तांकर टॉकिंग कम्युनिकेशन पावरटा बिल्ड होगा लगे। ओके, देन डिबेट से कौन ना डिबेट से तो पिला माने बेसिकली डिबेट गोटे पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर पिला मानकर आइडियल तांकर जहाँ भी नॉलेज थाए आर्गुमेंट थाए रीजन थाए गोटे इंडिविजुअल ग्रुप है आज यूजुअल ये से माने प्रेजेंट करि थाते। ओके, देन प्रेडिक्समेंट एंड प्रॉब्लम्स कौन रोची ना चिल्ड्रन नीड टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी ट्राई टू सॉल्व डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, पिला माने कौन करेंगे ना तांकर डिफिकल्ट सिचुएशन में जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी निजे ताको सॉल्व करिया को ताको अपॉर्चुनिटी दिया जीवो एवं से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिया को चेष्टा करिवे। देन द चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू पुट देमसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ ए पर्सन हैविंग टू मेक डिफिकल्ट डिसीजन। द चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू पुट देमसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ ए पर्सन हैविंग टू मेक डिफिकल्ट डिसीजन रोल प्ले कुड बी वेरी यूजफुल। ओके, तो बेसिकली जेकोसी सिचुएशन आसू तो पिला कौन करिवो ना जहाँ भी डिफिकल्ट माने प्रेजेंट सिचुएशन रोची ताकू से फेस करिकी तार डिसीजन मेकिंग पावरटा को एनहांस करिवो। ओके, ताकू टीचर आ तार पेरेंट्स मैंने एनकरेज करिया निहाती भाव आवश्यक जो कि कौन रोल प्ले वुड बी वेरी यूजफुल। ओके, से कौन टीचर और पेरेंट्स मानकर रोल प्ले यूजफुलनेस को क्लारिफाई करुची। देन ग्लो पपेट्स आम जानिले फोटो एंड पेंटिंग्स कौन द चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट ए स्टोरी और रिपोर्ट सेंटर ऑन ए पर्टिकुलर फोटोग्राफ और पेंटिंग द फोकस कैन बी क्रॉस करिकुलर। ओके, तो फोटोस कौन ना पिला मानक आमे एनकरेज करबा कंस्ट्रक्ट स्टोरी ऊपर रिपोर्ट सेंटर ऊपर ओके पर्टिकुलर फोटोग्राफी ऊपर पेंटिंग ऊपर ओके दूसरे कि कौन ना तांकर क्रॉस करिकुलर एक्टिविटी डेवलप होबो। ओके, देन आसला सॉरी radio broadcast. Okay, making a radio broadcast can be quite changing for many children because they have to
sustain talk whether to help gesture eye contact or an audience in front of them. Okay, basically କ'ଣ ନା ରେଡ଼ିଓ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରେ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଗେସ୍ଚର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ନା କାହା ସହିତ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନା ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିଏ ଥାଏ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଦେୟାର ଓନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ ୱାର୍କ କରିବେ। ଦ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ, ଯାହା ବି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟପିକ୍ ହେଉଛି ତାରି ଉପରେ। ଦେନ୍ ସୁଡ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଅର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅଦର। ଓକେ, ସୋ ରେଡ଼ିଓ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମାନେ 1x1 କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ରେ ରହିକି ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଓକେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ରେଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ ଶୁଣିକି କ'ଣ କରିବେ ରେଡ଼ିଓ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାରା ତା ସେଇ ୱେରେ ଓକେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଟପିକ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଦେନ୍ ଆସିଲା just a minute. The children can be given opportunity to talk and given topic for minute without hesitation. Okay, तो पिलाମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ଯେମିତି ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଜିଟେସନରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯେ ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ବା ଯାହା ବି ନଲେଜ୍ ରହୁଛି ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଥାଏ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଜିଟେସନରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ରିପିଟେସନରେ ଅର୍ ଡିବେଟିଂ then from the subject matter. Okay, if the rules are broken, other can challenge and continue to talk for their ରିମାଇଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ମିନିଟ୍। ଓକେ, ଯଦି ଏ ରୁଲ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ରୁଲ୍କୁ ମାନେ ବ୍ରୋକେନ୍ କରୁଛି ବଟ୍ ଅଦର କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସେ ଟେକେନ୍ କରିନେବ ଦେନ୍ ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିଚ୍ କରିପାରିବା ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ଓକେ, ଯେତେ ସବୁ ଆସିଲା ଆମର ଏଇସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ ଟୁଲ୍ସ ରହୁଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ପାୱାରକୁ ସେମାନେ ଏନହାନ୍ସ କରିବେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଗ୍ଲୋବ୍ ପ୍ରପେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡୋ ଥିଏଟର ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫଟୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଟକ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟକ୍ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଡିବେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ସ୍ୟାଡୋ ଥିଏଟର ଦ୍ୱାରା, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ସୋ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା।